Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Om pūrṇamada pūrṇamidam pūrņāt pūrṇamudacyate pūrņasya pūrṇamadāya pūrņam evāvaśiṣyate. The personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this world, this phenomenal world, are perfectly equipped as complete whole. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because He is the complete whole. Even though so many complete units emanates from Him, He remains the complete balance. So last time we discussed how Krishna is, why Krishna is Purna. There are different personalities, Ishwaras, in this material world, doing many kind of governing activities. They are called demigods. They have been given a particular work by Krishna, just like the Prime Minister has his cabinet, right? So that way, all Krishna has this, management purpose of the material world. He has various strong personalities who are either his devotees or they are empowered by Krishna to act in that way. Right? So they are called demigods. They act on behalf of Krishna to manage this material world. So they also control us. They control little things like sun god controls the sun planet, moon god controls the moon planet, Saraswati controls the knowledge, Ganesh controls to remove obstacles, right? Shiva controls to give benedictions easily. Like that, all different demigods are there. They control something and they give some benefit to us. But none can claim to be Supreme Personality of Godhead. That only Krishna can claim. He claims also in Bhagavad Gita. They claim that Mata Paratam Nanya, there is no truth superior to me. No other personality has, confidently claimed that he is the Supreme Person of Godhead. And those who have claimed have been demonic, like Ravan or Hiranyakashipu, who have been killed by Krishna, Vishnu himself. So no steady-minded person or intelligent person claims that he is God, because they all know their shortcomings. They all know that they don't have all the opulences. There are 6 opulences we discussed last time: strength, renunciation, beauty, knowledge, wisdom, fame. Right? These are 6 renunciations. So opulences. So only Krishna can claim that he has all these 6 opulences at the same time. Like I told you, he's the most beautiful person, the most intelligent person, the most famous person, the most powerful person. He lifted Govardhan. We can't lift even a small table. Right? The most renounced person. So like that, he has all these 6 opulences, 100%. Lord Vishnu has 94% of it. Lord Shiva has 84% of it. And we Jiva Tattvas, we have 79% of all these opulences. So we can't go beyond 78. No living entity is as powerful as Brahma. Brahma is the most powerful person, living entity. He can even he can go only till 78%. He can't go beyond. Brahma can never have the powers of Shiva. He can't have 84% of qualities. That is the maximum for Brahma. And we also living entities, because Brahma is one of us. One of a living entity becomes Brahma. Either he's the pure devotee of the Lord, he becomes, or some empowered personality. And very rarely Krishna, when there is no person left, no such devotee is there that who can occupy that post of Brahma, and there is no one who could be empowered. That time Krishna expands as Brahma, and in few cases he becomes Brahma, right? So otherwise, most of the cases, Brahma is a living entity who has been empowered, or who is a pure devotee who does the job of being a Brahma for some years.
He is also not permanent. 100 years he lives. 311 trillion years, human years. This much Brahma can live. More than that. And our Brahma is the smallest. There are there are many Brahmandas, and our Brahma is the smallest because our Brahmanda is the smallest. So, it depends on how big is your Brahmanda. So, that much head Brahma has. Our Brahma has 4-headed Brahma. Then there's 5-headed, 6-headed, 7-headed Brahma, like that, depending on how big the Brahmanda is. But none of them can, claim that, they are supreme, they are controlling everything. Like, like I always said, once to show, how Krishna is the supreme person of Godhead. He wanted to show everyone. He's a big show off, right? He wanted to show. So he called everyone he told Brahma to just, inspired Brahma to come to Dwarka. So Brahma came to Dwarka. This pastime shows how Krishna is complete. He's pūrņa, he's Parameshwar. There's no one above Krishna. So Brahma ji came to Dwarka. He was stopped at the gatekeeper. He stopped him. Where are you going? Well, I've come to visit Krishna. Who are you? So Brahma is saying, what do you mean, who am I? You don't know me, who am I? No, I don't know you. Please, who are you? Tell about your identity. So Brahma says, okay, tell the Lord that, Chaturmukhi Brahma, the Brahma of this universe, Brahmanda has come. So he goes inside, the gatekeeper, and then he comes back and then he takes this Brahma to meet Krishna. Then as Brahma goes inside and pays obeisances, he gets up. So he asks Krishna, your gatekeeper was not able to recognize me. Your gatekeeper, how come? Because I am the only Brahma, right? This 4-headed Brahma. How could he couldn't recognize? Because I am very famous. Everyone knows me. Who can have 4 heads other than me? So he was like, very, what do you say? अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे थे ब्रह्मा जी के. अरे मैं तो ब्रह्मा हूँ, मुझे कैसे नहीं पहचाना उसने? मैं तो पूरी दुनिया में खाली मैं ही ऐसा हूँ जिसके 4 मुख है, चारों साइड में, right? So I am the most easy person to find, to understand. So Brahma ji asked, why such? So Krishna says, okay. So you are not the only Brahma. So Brahma asking, what do you mean I'm not the only Brahma? Say, no, you are Brahma of this universe, but there are many Brahmas. Okay. So that's why my gatekeeper got confused. What do you mean there are many Brahmas? So now Krishna is showing the worth of Brahma, the so-called Brahma who claims to, who is the creator of this Brahmanda, who, different 14 planet system he made. Krishna is showing his औकात. हम थोड़ा एक छोटा घर बना लेते हैं, 2 BHK, 3 BHK का, या एक बंगला बना लेते हैं 3-4 मंजिल का, या कोई बड़ा एंटीना जैसे बना लेते हैं, एक छोटे से 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट एरिया में या 2000 स्क्वायर फीट एरिया में हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं, राइट? यहाँ पे तो कौन है? ब्रह्मा. ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने पूरे सृष्टि का सेकेंडरी निर्माण किया है. He was a secondary creator. Krishna is the first as a Garbhodaksha Vishnu, and the second is Brahma, who is creating all the 14 planet system. So he's very puffed up. Oh, I am Brahma. Everyone should know me. So Krishna is saying, you may be Brahma in this Brahmanda, but my gatekeeper, he knows everything. So he is asking you which Brahma you are. So then Krishna, what does it mean? Say, okay, I'll show you. Then Krishna summons all the Brahmas of all the Brahmandas. So 5-headed Brahma, 6-headed Brahma, 7-headed Brahma, like that, 10-headed, 100-headed, 1,000-headed, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, 100 crore, like that, trillion-headed, trillion-headed Brahma, they all come there and they pay obeisances. And then like Brahma is got vertigo. He was expecting that, he was thinking that he's the only Brahma. He was thinking that he's the only person, and there's only one Brahmanda, because it is said that our Brahmanda, जो भी है हमारे Brahmanda, they don't know, because our Brahmanda has been described as a coconut shell. Coconut देखा है किसी ने? जो अंदर पानी होता है, आधा पानी से भरा होता है, and ऊपर shell होती है ना. So no one inside the coconut can see outside the coconut, right?
So all those personalities are there, who are there in the Brahmanda. They can't see other Brahmandas. So then you may say, you may ask, you may question, अरे जो scientists देखते हैं इतने सारे galaxies या इतने सारे universes, वो क्या है? They are just seeing reflection of the universe in different ways. हमारे universe का reflection देख रहे हैं वो, because water element जो होता है, 5 elements, earth, water, fire and ether. So water में उसका reflection हमारे ब्रह्मांड का reflection होता है अलग-अलग. If I don't know how many of you been to circus. In circus you go and you stand in front of mirrors. There are different mirrors, right? Some mirror makes you fat, some mirror makes you thin, some mirror makes you, dwarf, some mirror makes you tall, like that, right? How many of you been to that mirror maze? Mirror maze. जो ब्रह्मांड है, that like the water element, it plays like this mirror. So what the scientists are looking at, when the scientists look, outside, so they are just seeing our Brahmanda reflected in many different ways. Sometimes bigger, sometimes smaller, sometimes longer, sometimes dwarf, sometimes different shapes depending on the waves of the water. If you see the waves, if you see your face in the water wave, sometimes your face, when the water is still, you can see nicely. When the water is moving, your face also gets distorted, right? Similarly, all of them are just seeing our Brahmanda only, and there's a reflection of a Brahmanda in that water in different shapes. That is called maze illusion. So because they can't see outside this Brahmanda, they can only see inside this. Similarly, Brahma also, he can't see outside the Brahmanda what is there. Maximum he can see is Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu. He can't even see beyond Garbhodakshaya Vishnu. He can't see Mahavishnu. He can't see spiritual world. Only when Krishna takes him, then time he can see. Otherwise he can't see. So he was like stunned. He thought that he is the only Brahma in this entire cosmos, and he is the Adipati, is the Prajapati, Prajapati of everyone. But then when he saw all these different Brahmandas, he felt so small. जैसे होता है ना, हम लोग, हमारे कॉलोनी के हम अच्छे क्रिकेटर होते हैं, हम छक्के मारते हैं हमारे कॉलोनी में, या हमारे कॉलोनी के रोड पे हम अच्छे छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, तो अपने आप को महान समझने लगते हैं. लेकिन जैसे हम हमारे कॉलोनी से बाहर जाते हैं और बाकी कॉलोनी आती है, हमको लगता है अरे यार हमसे कितने बड़े प्लेयर्स हैं, राइट? एंड देन फिर वो कॉलोनी से हम जब एरिया में हम जाते हैं तो और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं, तो हमको लगता है अरे यार हमको तो we used to think we are a great player, but we are nothing. And then हम जब स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, then we come to know बाप रे बाप, it's so rare, right? Only 300 people have represented India internationally, so it's so rare, right? Similarly, Brahma used to think that he is the पूरा इस ब्रह्मांड का हर कुछ वही है. But when he saw all these different Brahmanda, it was like, हम अपने आप को गली के सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, लेकिन जब रियल सचिन तेंदुलकर आएगा हमारे सामने तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे उसके सामने. उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्मॉल किड इन फ्रंट ऑफ बिग ब्रह्मास. एंड देन Krishna said, okay, now I'll show you more. Then Krishna summoned all the Shivas. So there's a debate, who is bigger? Krishna is bigger or Shiva is bigger? This debate is going on, especially on the social media. So this pastime shows that all the Shivas of all the Brahmandas, the Rudras, the different Rudras are there. He summoned all the Rudras of all the Brahmandas. They also came there, and they couldn't understand what is happening, because one Shiva is seeing the other Shiva, right? And he is saying, "Arey, who are you? I am Shiva. तुम कहाँ से Shiva?" Clone, clone होता है, clone, different clones of the same. उसी प्रकार के, he's like, am I seeing my own reflection? Is there some mirror here? Then Krishna said, no, there's no mirror here. This is Shiva. You are Shiva of this Brahmanda. He is Shiva from that Brahmanda. He is Shiva from that Brahmanda. Like that, as there are many Brahmas, as there are many Brahmandas, as there are many Brahmas, as there are many Shivas. So then Shiva said, oh my God, I used to think that I am the Mahadev. Yeah, Krishna said, you are Mahadev of this Brahmanda. You are Mahadev. You are the greatest God of this Brahmanda. That Shiva is the greatest God of his Brahmanda.
that Shiva is the greatest of his Brahmanda. Like that, all the Shivas are greatest of their Brahmanda. But I am Parameshwar. I am Ishvara Parama. I control all the Brahmandas. Or Krishna says, I control all the Brahmandas. Aham Sarvasya Prabhavo. Krishna, I am the control of all the Brahmandas, everything. Mata Paratam Nani, there is no truth superior to me. Maya Dakshina Prakriti. This Prakriti is working under my nature, my laws. Krishna is showing everyone that see who is pūrņam, who is the greatest. There is no one greater than me. That's why Krishna claims in the Bhagavad Gita, Mata Paratam Nanyat, means Nanyat, Mata, me, Nanyat, मुझसे ऊपर कोई नहीं है. Paratam, मुझसे ऊपर, Paratam कोई नहीं, Nanyat. And there is no truth superior to me. Brahmaji also, after when he saw this, he also wrote, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. He said, Ishvara Parama Krishna. Of all the Ishwaras, they're all controllers. Krishna is the Param. Ishvara Parama Krishna. Then Ved Vyas also wrote, Krishnastu Bhagavan Swayam. Eto Chamsa Kala Pumsham Krishnastu Bhagavan Swayam. So Krishna is Bhagavan. Before that, people are shooting Vishnu or different. But when Krishna showed his adipatya, shows his opulence, shows his Virat Roop, and then showed it all these different pastimes, then he told everyone that actually I'm not avatar, I'm avatari. From me all the avatar comes. That's why Krishna is called Pūrņa Puruṣottam. Krishna is not called Maryada Puruṣottam, or Krishna is not called half Puruṣottam. He's called Pūrņa. He's complete God. That's why he's 100% God. 100%. All the qualities of God, Krishna manifests. So Krishna showed Brahma this, that he is the Supreme Person of Godhead. The Om Pūrņam, adaḥ, pūrņam, idam. He's the perfect and complete. There's nothing lacking in Krishna. There's nothing lacking in Krishna. Someone can say, that what is lacking? In Lord Ramchandra, what is lacking? Let's try to analyze. In Lord Ramchandra, what is lacking? Two wife. So, भगवान अगर किसी कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान कुछ चीज, तो भगवान परफेक्ट कैसे हो सकते हैं वो? Any personality, he can be only called perfect when he has all the attributes. Understanding? Any personality who can only be called perfect when he has all the attributes. Can Lord Shiva dance with so many girls? Sati unka sati kar degi, right? Sati will do his sati. Shiva sati, even if he dares to dance with any other girl. So, lacking. This quality is lacking. There's something lacking. So how can God is all perfect, right? So how can something lack in God? So in Krishna you see all the contradiction. He marries 16,108. He dances with 350 million gopis. He breaks the laws of nature. He lifts Govardhan. He breaks the laws of gravity. He kills Putna. He gives her liberation. Maar ke bhi liberation. So all kinds of contradiction. He becomes the smallest and he becomes the biggest. Anu and Vibhu. He shows in Virat Roop. He is the smallest and the biggest. So all kinds of contradiction exist in Krishna very nicely. That's why he is called Pūrņa Puruṣottam. He is, he dances with all the girls, marries 16,108 wives, but he is called Brahmachari, Nastika Brahmachari. Why? Because he has no intimate connection with any of the girls. Even with his wife, this is the so-called 16,108 wives, he had 10 children, 10 boys and 1 girl with each. But they were not produced by physical intimacy. Just by glance he produced. So there was no physical contact. So, see the contradiction. Only Krishna can fulfill that. He married so many. He danced with so many. But yet, he is called Bala Brahmachari. He is called Nastika Brahmachari. So, that's why Krishna is called Pūrņa Puruṣottam. All contradiction exist in. कौन चोर को वर्शिप करता है दुनिया में? बताइए, कोई चोर को वर्शिप करता है दुनिया में? क्या भगवान चोरी कर सकते हैं? अगर भगवान चोरी झूठ नहीं बोल सकते तो फिर उनमें कुछ ना कुछ लैकिंग है, राइट?
तो भगवान ने झूठ भी बोला। कब झूठ बोला भगवान ने? अश्वत्थामा मर गया, वो झूठ बोला, बहुत झूठ बुलवाया, राइट। मैया को बोला माया ने माखन खायो, झूठ बोलते हैं, राइट। और चोरी भी किए, माखन चोरी, रन छोड़ के भाग गए। अब कौन सा इंसान जो महान कहलाता है जो रन में झगड़ा करते हुए छोड़ के भाग जाए? लेकिन वो भी वर्शिप करते हैं भगवान की। इवन दैट इज वर्शिप ऑफ कृष्णा। हिज रन छोड़ इज आल्सो वर्शिप्ड, हिज माखन चोर इज आल्सो वर्शिप्ड। No thief is worshipped in the world, right? But his माखन चोर is worshipped, his रन छोड़ is worshipped, रन छोड़ के भाग गए। His वस्त्र चोरी is worshipped, वस्त्र चोरी किया गोपियों के। तो ये कर सकते हैं? लॉर्ड शिवा, कृष्णामा, anyone can even dare to do this? No, he can do it, right? So that's why he's called complete God. You know, कृष्णा को complete God ऐसे नहीं हमने बोल दिया है कि भैया हमारा मन क्या, चलो आज हम कृष्णा को। When you analyze everything, दुनिया में आप जो भी चीज देखो कृष्णा में आपको परफेक्ट दिख जाएगी। You want a best husband, Krishna can be the best husband. You want a loving boyfriend, Krishna can be the loving boyfriend. Ram cannot be a loving boyfriend. Lord Ram and Lord Shiva can never be a boyfriend. Can Lord Ram and Shiva be a boyfriend? नहीं, वो लैकिंग है उनमें। Anxiety, yes, Krishna is anxious. राधा रानी कहाँ पे, क्या होगा, क्या? So he plays that part also, being anxious. He is depressed, he is crying also many times. Radhe Radhe, whole night he cries in Dwarka. So he shows everything. Whatever you see in the material world, it has a source in Krishna. Otherwise, there is nothing can exist without Krishna. So आपको, it is said, Bhagavad Gita, Krishna says, everything is a perverted reflection of there in me. In me it is perfect. But in the material world it is a perfect reflection. जो आप लोग, जो भी आपके माइंड में आप सोच सकते हो, जो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो भी आपने बनाया हो, कुछ भी, एवरीथिंग एग्जिस्ट ओरिजिनली विद कृष्णा। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड पूर्ण पुरुषोत्तम। लव एग्जिस्ट विद हिम। ही इज अ परफेक्ट लवर, परफेक्ट ब्रदर, like Balram, and Sridham and Sudama, perfect master, perfect husband, perfect son, everything perfect. That's why he's called, पूरा वॉर जिता दिया बिना अस्त्र उठाए पूरा वॉर जिता दिया। अब इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा? ये वॉर में पार्ट भी लिया, एक अस्त्र भी नहीं उठाया और जीत भी गए वॉर, राइट? Lord Ramchandra had to lift the weapon to kill Ravan, right? But यहाँ पे कृष्णा ने बिना शस्त्र उठाए, बिना वॉर में पार्ट लिए, पूरा वॉर, महाभारत का वॉर जिता दिया अर्जुन को। So that is why Krishna, Krishna, we don't call Krishna the supreme God. That's because we are sentimental towards him. कृष्णा ने आके हमको कोई 100 के नोट नहीं दिए कि मेरे को गॉड बोलवा। When we analyze Krishna, all the qualities that are there in God, when we see he has everything in him, there is nothing lacking in him. And Hanuman cannot go and climb on Lord Ram's shoulders. Lord Ramchandra climbs on Hanuman's shoulder, right? Hanuman cannot go and climb on Lord Ram and बोले चलो मुझे घुमाओ, पूरा अयोध्या घुमाओ मुझे। ऐसे कर सकते हैं हनुमान? ऐसा नहीं कर सकते। बट श्रीदाम, सुबाल, मधुमंगल, बलराम, they all climb on Krishna's shoulder. बोलते हैं पूरा वृंदावन घुमाओ हमको। कर सकते हैं हनुमान जी या नंदी या कोई भी, शिवा खाना खा रहे हैं, वहां पे जाए उनके मुंह से रोटी छीन ले, कोई कर सकते हैं? हनुमान जी कभी सोच भी सकते हैं ऐसा करने का कि एक राम के मुंह से जाके निवाला छीन ले और खा ले, या राम के साथ में बेड पे सो जाए? नंदी राम के, शिवा के साथ बेड पे सो जाए, सो सकते हैं? बट श्रीदाम, सुमाल, ये तो कृष्णा के साथ में साथ सोते हैं। कृष्णा खा रहे हैं, he is having his food in Vrindavan, and Subal, Madhumangal and all, Ujjwala, they all are sitting there, and they pull the roti from Krishna's mouth and they start eating. And Krishna saying, hey, what are you doing? Hey, chup karo. You don't talk much. They said, फटकार दे कृष्णा को। एक तो तुम यहाँ काम नहीं करते बराबर, गोपियों के भी भागते रहते हो, फिर हमको बोलते हो। दे फटकार देते हैं कृष्णा को। So this is why, because Krishna allows, there is intimacy is there. This intimacy with devotees is not found anywhere else. Understand?
That's why he is called Purna Purushottam. That's why he is called complete, absolute God. In beauty, in renunciation, in fame, in अभी लोग बोलते हैं कि okay, Krishna, adaḥ, Shiva is God, supreme. Okay, I accept. Devi is God. Okay, then उनकी philosophy क्या है? What is the philosophy? Is there any book? कहां तक पहुंचोगे? आपका गोल क्या है वर्शिप का? किसी भी वर्शिप का एक गोल होना चाहिए, राइट? क्या गोल है आपका? कोई फिलोसफी नहीं है. कृष्णा की क्रिस्टल क्लियर फिलोसफी भगवत गीता में दे रखी है. What you have to do, what you have to achieve, and how you can come to me. संबंध क्या है आपका मेरा? Your relation with me, Krishna says, you are my part and parcel. मब अंश जीवलोके जो भूत सनातन. आप मेरे अंश हो. जितने भी लिविंग एंटिटी मेरे अंश है. हम बीज प्रदा पिता. मैं आपका पिता हूं. तो आपको मुझसे संबंध जोड़ना है. क्लियर कृष्णा बताते हैं संबंध. अभी देख कैसे जोड़ोगे? यम व्यम वापि स्मरणम. एंड में मेरे याद करोगे, मैं पता होगा. वो कैसे करोगे? मन मना मक्तो मन नमस् करो. ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी. सब धर्मान परित्याज्य. ये प्रयोजन है. और गोल क्या मिलेगा? गोलोक धाम. परमम मम. सो कृष्णा अपना संबंध बताता है, आपका प्रयोजन बताता है, और अभिधेय संबंध, रिलेशनशिप, अभिधेय, प्रोसेस टू रियलाइज दैट रिलेशनशिप एंड प्रयोजन, द गोल. ये इतना सटीक किसी ने नहीं बताया आज तक शास्त्र में. कोई भी शास्त्र उठा लो आप, चाहे बाइबल उठा लो. हम तो इसकी बात करें बाइबल में भी, होली बी हेवन. आप हेवन में है भगवान. आपके भगवान का नाम क्या है उनके? देयर इज नो क्लियर कंसेप्शन. अल्लाह कहाँ रहते हैं किसी को पता ही नहीं है. भगवान का क्या गॉड जीसस क्राइस्ट कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं. कोई एड्रेस नहीं है. वहां पे जाने का कुछ पता नहीं, कैसे जाना है. शिव के पास कैसे जाना है कुछ पता नहीं है आपको. कृष्णा क्लियर एवरीथिंग. हम अपना एड्रेस दे रहे हैं, अपना फिलोसफी दे रहे हैं, अपना रास्ता बता रहे हैं कैसे आना है. संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, एंड इज गिविंग इट टू अस इन भगवद गीता. दैट्स व्हाई he is called Purna Purushottam, because he has given everything in detail by which we can, if we follow that, we can come back to Godhead. Shravan Kirtan Smaran Pad Sevanam Archamanasam Atma Nivedanam. He has given everything to us. You have to follow it. That's why it's called Purna Purushottam. Because he is completely perfect. क्या है? Om Purnam adaḥ pūrņam idam. Completely perfect. Pūrņāt, pūrņam, pūrņāt. Pūrņāt means completely perfect, complete. कोई ये नहीं है, कुछ कमी नहीं है, एक भी चीज की कमी नहीं है. अब कृष्णा से जुड़ोगे आप, तो आप में भी कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी. Without Krishna, you'll be zero. You have zero value, because whatever you acquire, whatever you gain, you lose. But Krishna is that one. अगर जीरो के आगे वन लग जाए तो कितना ही जीरो लगाओ, जीरो की वैल्यू बढ़ते रहेगी. लेकिन अगर वन नहीं हो तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो ओनली. सो व्हाटएवर वी डू, वेरेवर वी गो, एंड इज जीरो. एंड रावण, ओके, वी विल टेक रावण. रावण किसके डिवोटी थे? रावण किसके डिवोटी थे? तो शिव तांडव स्तोत्रम भी गाया. He got all the power from Shiva, everything. एंड में क्या हुआ? एंड में क्या हुआ? रावण के आगे शिव बढ़ के 10 हो पाया उनका, क्योंकि शिव से जुड़े हुए थे वो. तो क्या वो 10 हो पाया अपने लाइफ में, या 100 हो पाए, या 1000 हो पाए रावण? बताइए. तो शिवा was standing with him. Right? So he should have become 10, 100, 1000, whatever. But could he become? एंड में जीरो हो गया उनका, मर गए ना. कृष्ण ने विष्णु ने आके मार दिया. और वही विभीषण जो रावण का ही भाई था, उनका क्या हुआ? कृष्ण राम खड़े हो गए आगे, भगवान खड़े हो गए, तो ही इज ग्लोरियस. हनुमान के आगे राम खड़े हो गए, तो हनुमान को सब वर्शिप करते हैं. प्रहलाद के आगे विष्णु खड़े हो गए, सब प्रहलाद को वर्शिप करते हैं. हिरण्यकशिपु, ये प्रहलाद के फादर हैं, हिरण्यकशिपु, इनकी वर्शिप की उन्होंने ब्रह्मा की.
10,000 साल तपस्या की। ब्रह्मा, क्या मिला? मुझे ऐसे नहीं मरना, मुझे ऐसे नहीं मरना, मुझे रात को नहीं, मुझे दिन में नहीं, मुझे घर में नहीं, मुझे बाहर नहीं, मुझे आकाश में नहीं, मुझे धरती पे नहीं, मुझे किसी अस्त्र से नहीं, मुझे कोई शस्त्र से नहीं, मुझे किसी से नहीं मरना। He thought he'll become, उसने तो उनको लगा कि उन्होंने उल्लू बना दिया भगवान को। भगवान ने क्या किया? उसको उल्लू बना के ब्रह्मा जी आके वन लगा पाए उसके आगे? ब्रह्मा जी ने उनको ये सब ये दिया ना सारे वरदान। Brahma was standing with him as one, but Brahma is not one. That's what I'm saying. No one is one. Only Krishna is that one. Because कोई भी आएगा वो जीरो ही होगा, क्योंकि एंड रिजल्ट जीरो ही मिलने वाला है। रावण को जीरो मिला, हिरण्यकशिपु को जीरो मिला, हिरण्याक्ष को जीरो मिला, कंस को जीरो मिला, जरासंध को जीरो मिला, शिशुपाल को जीरो मिला, सब जीरो रिजल्ट। और वो प्रहलाद मारा नन्हा सा बालक, और ध्रुव मारा नन्हा सा बालक, या द्रौपदी या कुंती या हनुमान या शबरी, जिनके सामने कृष्णा खड़े हो गए तो वो इटर्नल बन गए। That was it. Krishna is one and rest everything is zero. Because अगर कृष्णा नहीं होगा तो आप किसी को भी लिया वहां पे वो जीरो ही होगा, वो वन कभी हो ही नहीं सकता। Because Krishna is the only perfect person. Understand? That's why it's called complete whole. Like we were doing these qualities of Krishna, right? So we had discussed around 17 qualities of Krishna. The first was Suram Yagna, beautiful body features. The second was, these are all the special qualities that only, the 64 qualities that Krishna has in complete perfection. Sarva Lakshana Yukta, Sarva Sal Lakshana Yukta, auspicious characteristics. Ruchira, pleasing. Tejas Santpita, effulgent. Balyan, strong. Vaya Sanvita, ever youthful. Vivid Bhuta, Basatvit, wonderful linguist. Truthful, Satya Vakya. Priyam Bada, pleasing talker. Vavadhuka, fluent in everything. Shupandita, highly learned. Not Pandita, Shupandita is perfectly learned. Buddhiman, highly intelligent. Genius, Prati Bhavita, artistic, Vidardha. Clever, Chatura, expert, Daksha. And we did till Kritigna, grateful. And then comes determined, 18 quality Krishna has, that is determined. Sadvrata, a person who upholds his vows and acts to fulfill his promise is called determined. Krishna showed practically how he keeps his promise by delivering the celestial Parijat flower to his wife Satyabhama, which he had promised, or by saving Draupadi, or by protecting Arjuna on the battlefield. To protect Arjuna, Krishna broke his own vows. So Krishna can break his vow to protect his devotee. So determined. Krishna is more determined to take us back home, back to Godhead, than we are to go back home. Last time I told, Krishna is so determined. I think this also we did. This is the reason why he sends acharyas, because he is determined to take us back home, back to Godhead. Expert judge of time and place, circumstance, Desh Kala. Supadita is expert judge. Many people ask us, why there are so many religions. Because Krishna is the expert judge. He starts a religion, as per people, as per that locality, time, place and circumstance. For example, Islam. He started Islam, as impersonal, because the people there were very fallen. They were, not even taking bath for months. They were eating all kinds of nonsense things. They were having intimate relationship with their own mother and sister. So for them, as per time, place and circumstance, he started Islam, where he only told them the basic thing कि भैया रोज नहीं नहा सकते हो तो 7 दिन में एक बार नहा लो. अगर बिना मांस के नहीं रह सकते हो तो बलि हलाल करके
क्या बोलते हैं उसको, बलि, या what is called, कुर्बानी देके you can do it, right? Time, place, circumstance. उनको उसके आगे समझ में नहीं आया. Why Krishna did not reveal that he has a form to the Muslims? Anyone can tell why Krishna did not reveal he has a form? Why he told I am Nirakar, or I am light, or I have no form? Why? You can tell. Any kind of form, yeah. Because for their consciousness was so bad that they were having relation with their own mother, own father, own brother. They were all kinds of, homosexual, heterosexual, whatever, whatever you can call them, all kinds. Forget that. Even, with animals also they could have, even animals ko bhi chhodte nahi. Forget animals, necrophilia. Necrophilia is what, necrophilia? Necrophilia? In the Middle East, they were practicing. Necrophilia means, having sex with dead bodies. So they were so fallen कि dead body को भी नहीं छोड़ते थे वो. मर गए, उनके कब्र से निकाल के they used to have this. So उन लोगों को यदि आप बताओ भगवान में आकार है, फॉर्म है, तो भगवान में भी वही देखेंगे वो. जो डेड बॉडी में भी सेक्स देख रहे हैं, तो भगवान की मूर्ति में क्या देखेंगे वो? अंडरस्टैंड? भगवान की मूर्ति में क्या देखेंगे वो? वही फॉर्म देखेंगे, वही सब कुछ देखेंगे भगवान की मूर्ति में. एंड और भी बड़ा अपराध करेंगे. ये तो और भी बड़ा अपराध है. when you see lustily, राधा कृष्णा और लक्ष्मी नारायण और सीता राम, it's a very biggest अपराध. So that is the reason why their form was not revealed to them. Similarly, even the Mayavadis, उनसे form भगवान ने दूर क्यों रखा है? Because they are too much in अहंकार. And अहंकार से कभी भी lust develop हो सकता है. And lust से कभी भी you can just, get attracted to any form. इसलिए मायावादी से भी भगवान ने फॉर्म, तुम ब्रह्म करो. Because you are not free from lust yet. You be a satisfied Brahma Jyoti only. So that's the reason why, Krishna did not reveal. And even थोड़ा better उनसे बस ये थे क्रिश्चियन लोग. उनमें थोड़ा था, उनमें भी ऐसा ही था. 10 लोगों से सेक्स करना, ओपन रिलेशन में रहना, सब कुछ था. तो उनको भी भगवान ने बोला है, your father in heaven, holy be your name. Others there, you are made in the image of your father. But कौन है वो नहीं बताया. Time, place and circumstance. क्योंकि वो टाइम पे उनकी बुद्धि समझने के लायक नहीं थी. They were so much lusty. They couldn't understand form. So even Jesus Christ did not reveal that, God has this form. Because God is so beautiful. Krishna is so beautiful. यदि आपके अंदर इतना लस्ट जैसे होगा, तो आप क्या कृष्णा से, you start thinking homosexual relationship with Krishna only, right? Not thinking that. Like many people, they come to us, who are LGBTQ, they used to come. Oh, can we have Krishna as our, boys, Can we have Krishna as our husband or as a lover? You want to see Krishna ko banana hai aapko. So, you have to understand. So these are the reason why it was not revealed. Buddhist, why Buddha was revealed? Because at the time Buddha, people were using Vedas and doing animal sacrifices. They were killing animals in the name of Buddha, in the name of Vedas. So Buddha's work was to stop that. So he rejected the Vedas altogether. Vedas bekar hai, Vedas ko mat follow karo, Vedas ko. He started his own. So time, place and circumstance. Krishna creates religion as per people's consciousness. अघोरी लोग हैं, उनके लिए कृष्णा ने शिव को बोला कि आप भूतनाथ बन जाओ, कि वो आपको वर्शिप कर सकें. जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में टोटली, जिनको मांसाहार, और ये हिंदुओं में भी, उनके लिए काली को कृष्णा ने किया. ओके, you can worship Kali and you can do बलि उन काली के सामने. फिर भैरव जी, उनको आप, if you know भैरव, you can offer wine to भैरव. So जो लोग बहुत पियक्कड़ होते हैं, वरना हर इंसान को सबको भगवान की पार्ट एंड पार्सल है, तो सबको ग्रेजुअली ऊपर, he has to take everyone. He can't leave anyone's hands. So gradually he's taking. For devotees, it's like elevator. फट से हम पहुंच जाते हैं. But people who are low in consciousness, who are attached to eating, sleeping, meeting, defending in all kinds of ways,
For them, different religion Krishna did. Okay, आप ये follow करके एक step आगे आओ, आप ये follow करो दो step आगे आओ. Like I always say, if you are smoking 100 cigarettes per day, then I can't tell you to leave that cigarette in one day. Gradually I have to make you leave. 100 से आपको मुझे 80 पे लाना पड़ेगा, 80 से 75 पे लाना पड़ेगा, 75 से 50 पे लाना पड़ेगा, 50 से 20 पे लाना पड़ेगा, 20 से 10 पे लाना पड़ेगा, 10 से 0 पे लाना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली जो इतने फॉलन थे उनको ग्रेजुअली एलिवेट करना पड़ेगा आपको. उनको एक सेकंड में आप नहीं बोल सकते कृष्णा से वर्शिप करो, अदरवाइज they can't connect with Krishna, because Krishna demands complete purity. All the 4 pillars of dharma you have to follow to worship Krishna. No meat eating, no intoxication, no sex, no gambling. You have to follow that, only then you can worship Krishna. You can't worship Krishna because he demands complete surrender. Sarva dharman paityajaya. You have to give up everything, then you come to me. Otherwise, you can go to any demigod. That's why the demigods are there. They are, because so many consciousness is there. That's why we have so many demigods also to fulfill those consciousness. And they start, many times the demigod also start, a particular religion as per the people of that particular area, like the Mayan civilization. It was started by, Mayan civilization was started by Hanumanji, as per their understanding. So if you go to Brazil and Mexico, you will find Hanumanji's, murti there. And if you Google, the monkey god Brazil or Mexico, you'll see Hanumanji's murtis are there. So many murtis there. So like that, time, place, circumstance, Krishna seeing, he's a perfect seer of that, he reveals relation because he can't let anyone go outside his purview. सबको एथिस्ट को भी कृष्णा उनमें दिमाग देता है कि ठीक है you worship nature, because क्या कर रहे हैं एथिस्ट लोग, साइंटिस्ट लोग, नेचर को अंडरस्टैंडिंग करें, नेचर किसका है, कृष्णा का ही, इनडायरेक्टली उनका ही प्रोग्रेस हो रहा है, उनको पता नहीं, उनको लग रहा है हम भगवान को डिफाई कर रहे हैं, बट दिन रात किसके बारे में सोच रहे हैं वो एथिस्ट है, किसके बारे में सोच रहे हैं दिन रात, नेचर या ब्रह्मांड या इसके बारे में, वो किसका है, माया दक्षिण प्रकृति, ये तो मेरी है, कृष्णा बोलते हैं मेरा विराट रूप है, इनडायरेक्टली वो भी कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं. तो कृष्णा इज वेरी एक्सपर्ट, सब वे में उन्हें पकड़ रहा है. ठीक है, कोई को ज्यादा टाइम लगेगा कृष्णा के पहुंचने के, कोई को कम टाइम लगेगा, कोई को हजारों बर्थ लग जाएंगे, कोई को 10 साल में हो जाएगा परफेक्शन, कोई को 1000 साल लग जाएंगे, कोई को 1 मिनट में परफेक्शन हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर सरेंडर, योर अंडरस्टैंडिंग, योर लेवल ऑफ trying to understand, inquisitiveness, or how much jnani you want to be, or how much jigyasu you are, or guru kripa. All these things depends, how fast you can progress. So he's an expert judge of time and place, and he reveals everything, as per time, place, and circumstance. Seer by the authority of Shastra Chakshu. In Bhagavad Gita 15.15, Krishna says that he compiled the Vedas, he knows the Vedas and can be known by the Vedas. Krishna told, Aham Veda, Vedakrit. Vedesya sarva aham eva vedya. Krishna says, Vedesya sarvam aham eva vedya. So from all the Vedas, I am to be known. In fact, I am the compiler of the Vedas. I know the Vedas and I am to be known from the Vedas. So Krishna, if you want to understand Krishna, you want to understand God, you have to understand him through Shastra Chakshu. And Krishna, that's why reveals Shastra. He doesn't go outside the purview of Shastra. Even Bhagavad Gita is Shastra only. He doesn't tell, that do as you want to do. अपने जो मन में आता है वो करो. जैसे आजकल बोलते हैं ना लोग, काफी लोग, आप चैंटिंग करो, अरे चैंटिंग से क्या होगा, भगवान को दिल से पूजा करो, दिल से भक्ति करो, आपको भगवान मिल जाएंगे, दिल से, सबको दिल से करो, राइट? आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आप लोग को, राइट? ये लव, ये सब दिखावा की जरूरत नहीं है. यू कैन लव इन योर हार्ट, और कुछ भी करो, सारे पाथ भगवान के पास ही जाते हैं. ऑल roads lead to the same, or all rivers lead to the same ocean, right? They tell the same thing. But Krishna says Shastra Chakshu. Guru, Shastra, Sadhu. Ye teen Krishna sets the Shastra because he gives the Vedas. If you read that, today I think today only we posted, right? About the Gayatri. Today we posted Murti
Maigata, Spruranti Pravishvesheshu, Mukhabhni Samvyabhanu, Gayatrim Gayatra Tasmat, Adhigatya Shiroja Samsaktas Chadi Gaurana, Divyatam Agaman Tata, Tvachya Prabhodo Tavidhir, Vijnanta Vatha Sagre, Tasto Veda Sarga Sarena, Shoto Nena Na Keshavam. Then Gayatri, the mother of the Vedas, having been manifested by the divine sound of Krishna's flute, entered the lotus mouth of Brahma, the self-born, through its 8 ear holes. Thus the lotus-born Brahma received the Gayatri mantra, which had sprung from the song of Krishna's flute. In this way he attained twice-born status of Brahman, having been initiated by the Supreme Person of Godhead himself. Enlightened by the recollection of Gayatri, which embodied the 3 Vedas. So the 3 Vedas, the Gayatri hai, Gayatri is the capsule, okay? गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो एक ही मंत्र जो हमको पता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म गायत्री. But then there is Kama Gayatri, then there is Gopal Gayatri. So Brahma was given all the Gayatris by Krishna, right? And the complete Vedas, it is said that we have only 10% of the Shastra revealed to us. The complete Vedas, the complete Upanishads, the complete Puranas, the complete Itihasas, the complete Upa-Upanishad, everything, Angas, whatever, Agamas and Niyamas and Mahabharat and Ramayana, everything just constitute 10% of the complete Shastra, 10% of the Shastra. 90% we are not revealed to us. Krishna reveals that to Brahma. Even Brahma कोई पूरा reveal नहीं करते Krishna. So, this, because जितना आप गायत्री को realize कर पाओगे, all the 3 Gayatris, when you chant Brahma Gayatri, Gopal Gayatri and Kama Gayatri, these 3 Gayatris, and obviously इसमें 2 और हैं, Guru Gayatri and Gauranga Gayatri, ये 5 Gayatri होते हैं. ये 5 Gayatri आपको मिलते हैं तो आपको पूरे जितने भी when you लोग बोलते हैं, like if you acharyas always add something to the previous thing, like the 4 Vedas were there, the Puranas was an addition to the Vedas, the Mahabharata, the Ramayana was an addition, because the acharyas, when they chanted the Gayatri, so the Vedas are 10%. अब 90% तो रिवील नहीं है. कैसे रिवील होगा वो? आप जब ये तीनों गायत्री चैंट करते हैं, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने चैंटिंग किया, तो उनको जो 90% में से भी कुछ भाग हैं वो रिवील होते हैं, ओके, एंड वो फिर ऐड करते हैं. इसी प्रकार के शास्त्र बनते हैं आगे जाके, ऐड ऑन होता है, all that's why it is said acharya is not bound by shastra. Acharya can make shastra. There's a very, that's why acharya जो होता है, that is a very unique post. That is not an ordinary post. Acharya is a nitya siddha devotee, a pure devotee coming from Golok, because only he can add, he can realize what is not revealed yet to you. So they come and give plus, and like this Gaudiya Vaishnavism, right? Gaudiya Vaishnavism was never revealed before. Any yuga, any yuga, you could go only to Vaikuntha planet. You couldn't go to beyond Vaikuntha. You couldn't go to Dwarka, Mathura or Goloka. But then Lord Chaitanya came and he revealed, he added that was already existing. Using that, he added more. And then as all the acharyas came from Rupa, the 6 Goswamis to Srila Prabhupada, they kept on adding. The purport is adding. How you can realize those things, how you can read. So acharyas have the power to make shastra. You have to understand, acharyas have the power to make. Acharyas are not bound by shastra. So when they chant the Gayatri, the Kama Gayatri, they realize different aspects of the absolute truth, and then they come and write. They give the commentary. Okay. Similarly, Brahma also, when he chanted, when he heard the Gayatri, the flute of Krishna's, Krishna's flute sound. And what was the sound of that flute? Does anyone know? The sound of that flute, जो sound आ रहा था,
इस प्रकार से ओम भू, that was coming in the sound pronunciation of om, in that sound pronunciation it was coming, in that rag it was coming, the Kama Gayatri. So that's why Brahma could hear that, and then he उसको विस्तार किया, ब्रह्मा ने समझा कि क्या कृष्णा बोल रहे हैं, and he created the entire universe and he gave. So here it is said that in the way he attained the twice born status, having been initiated by God himself, enlightened by the recollection of Gayatri, which embodied the three Vedas, Brahma became equipped with the expanse of the ocean of truth. Then he worshipped Śrī Krishna, the essence of all Vedas, with the hymn. And what was that hymn? The Kam Gayatri or the Gopal Gayatri. The vibration of Krishna's flute is the origin of Vedic hymn. He said the vibration of Krishna's flute is the origin of Vedic hymns. Lord Brahma, who is seated on the lotus, heard the sound vibration of Krishna's flute and was thereby initiated by the Gayatri mantra. Wherever Krishna says, I am the Vedas. So this sound, it is said, this sound vibration is the origin of those Vedas. That's why, Krishna is revealing to Brahma, okay, this is the Vedas, and if anyone who wants to get me by following the Vedas perfectly can get me. But one who becomes diverted by the flowery words of the Vedas, like the Karma Kanda section of the Vedas, or the Upasana Khand, or the Ayurveda, or he'll get more and more entangled. But one who is intelligent, Krishna will give you the chabi to go out, but he's also given us the bhul bhulaiya. If you are lucky, if you are really lucky, then you can come out of that bhul bhulaiya. चाबी इज देयर, लास्ट डोर का चाबी है, लेकिन वो भूल भुलैया भी है. तो वेदास वैसे हैं, ये वेदास आप रीड करो तो कृष्णा के पास पहुंचोगे, लेकिन इतना भूल भुलैया है वेदास में. कर्म योगा, कर्म कांडा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, अष्टांग योगा, हठ योगा, बुद्धि योगा, इतने सारे योगास का है, सांख्य योगा, भूल भुलैया है. Then you get, because if you do some कर्म कांडा एक्टिविटीज यू विल गेट नाइस रिजल्ट. भगवान को 100 रुपये चढ़ाओ 1 करोड़ रुपये आएगा, तो अरे थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं ना, अभी कृष्णा के बाद में जाएंगे, राइट. कर्म कांडा से वो आ गया. कर्म योगा से क्या आएगा? कर्म योगा से you will become very यशस्वी, very popular. Oh, he is a कर्म योगी, you will become very popular. So नेम फेम में फंस जाओगे उसमें, फिर कृष्णा के पास जाने का पाथ भूल जाओगे. फिर अष्टांग योगा से क्या आएगा? मिस्टिक पावर्स आएंगे. मिस्टिक पावर से आपके बाद में लगीमा अगीमा सब आ गया. यू विल थिंक, लेट मी एंजॉय, आई कैन फ्लाई फ्रॉम हियर टू अमेरिका, आई कैन वॉक ऑन द रेज ऑफ द सन, आई कैन क्रिएट गोल्ड आउट ऑफ थिन एयर, आई कैन बिकम स्मॉलर देन द एटम, आई कैन बिकम बिगर देन द ब्रह्मांडा. सो लेट मी एंजॉय, व्हाई शुड आई गो बैक टू गॉड, टू कृष्णा. सो यू गो टू दैट सिद्धि के पीछे भागते हो. इसी प्रकार यू डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर रियल गोल. द वेदास वो भी है, क्योंकि वो भलैया है. तो आपको ये होना चाहिए फोकस्ड कि आपका पाथ कहाँ है, आपको कृष्णा को, बिकॉज वेद कृष्णा से निकले और वेद कृष्णा के बाद पहुंचाएंगे. बट वी हैव टू बी फोकस्ड एंड वन पॉइंटेड. सर्वधर्मान प्रेतय, कृष्णा जी बोलते हैं, सर्वधर्मान प्रेतय माम एकम शरणम व्रज. सबको छोड़ो, इसके बहुत डायमेंशन. सबको छोड़ो. किसको छोड़ो? कर्म योग को छोड़ो, कर्म कांड को छोड़ो, बुद्धि योग को छोड़ो, अष्टांग योग को छोड़ो, हठ योग को छोड़ो, कुंडली यज्ञ को छोड़ो, बुद्धि योग, सांख्य योग को छोड़ो, सबको छोड़ो. इसमें फंस गए आप तो कभी निकल नहीं पाओगे. हजारों साल लग जाएंगे आपको इसमें फंसने निकलने में. विश्वामित्र ने 50,000 साल तपस्या किया भगवान को पाने के लिए. भगवान तो मिले नहीं. रंभा मेनका आई, एक खाली 10 मीटर चली, छन 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 करके वो विश्वामित्र का भांडा टूट गया. सब कुछ है ना, सब कुछ उसका जो किया करा है सब पे पानी फिर गया, राइट. ये हो गया. तो you have to, if you get entangled in all these externals, then you can't. जब भी कृष्णा बोलते हैं सबय पुंसा परो धर्मा युद्ध भक्ति अदोक सजे. The real dharma of everyone is bhakti to me. बाकी सब नैमित्तिक धर्मा है. Demigod worship, this worship, that, but it's distraction. Don't get entangled in that. So
he explains everything from the authority of Shastra. He is the giver of Shastra, and from Shastra you can attain Krishna. Right? That's why he says in Bhagavad Gita, for a doubting soul, there is happiness neither in this world nor the next world. No, you have to follow Shastra. Right? If you doubt Shastra, if you don't follow Shastra, then what Krishna says, the person who doubt the revealed scripture do not attain God consciousness. Understand? तो जो बोलता है ना कि अपने मर्जी से कुछ भी करो, कहाँ लिखा है? कृष्णा कहीं सीधा बता रहे हैं. But ignorant and faithless person, जिसको शास्त्र में फेथ नहीं है, who doubt the revealed scriptures, जिसको शास्त्र के ऊपर ये नहीं है, फेथ नहीं है, अपने मर्जी से कुछ भी करते हैं वो, do not attain God consciousness. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. ना ये जन्म में आपको भगवान मिलेंगे, ना अगले जन्म में मिलेंगे, यदि आप अपने मन से करोगे तो. हमारे मन से क्या हम कर लें जो भी, ऐसा नहीं होता है. You have to follow the perfect. आप चाहो मेरे मन से मैं वाटर बनाऊंगा, तो ना होगा. हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 5, मैं मेरे मन में कुछ भी करूंगा. मैं क्यों H2O करूं? मैं आपका फॉर्मूला यूज क्यों करूं भाई? H2O is equal to water. No, I will use H4O5. चलो मिक्स करो, बनेगा पानी कभी ऐसे? पानी बनेगा कभी ऐसे? अपने फॉर्मूला से, अपने मन से. बनेगा पानी. उसी प्रकार अपने मन से करना, साधना, सेवा, अपने मन. साधु संग भी हमको YouTube से मिल जाएगा, हम YouTube से सुन के कर लेंगे, या हम रील्स बन से कर लेंगे, या हम गूगल पे जाके कर लेंगे. उससे नहीं मिलना है. You have to follow proper Shastra. Otherwise, you will create a havoc in your own spiritual life. Understand? Krishna is clearly saying, for a doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. And you will not get. For a faithless person, God consciousness, you cannot get God. So, that's why Krishna gives us this Shastra. क्यों कृष्णा वेस्ट करेंगे अपना 45 मिनट्स? कुरुक्षेत्र के बैटल चल रहा है, पूरे लोग यहाँ पे सब असेंबल्ड है, पूरा वर्ल्ड असेंबल्ड है, एंड कृष्णा बीच में जाके ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को. क्यों? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है. ये सबसे बड़े युद्ध के बीच में सबसे बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध में दी जाती है, दी गई, तो उसकी रेलेवेंस हो जाती है. फिर कभी और रहते लोग भूल जाते हैं, लेकिन महाभारत इतने बड़े युद्ध में कृष्णा ने इतना ज्ञान, रोक के युद्ध को ज्ञान दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ज्ञान में उसमें, इसलिए कृष्णा ने दिया. So that's why we have to follow the शास्त्र. हमारे मन से नहीं करना है हमें, वरना हमारे मन से हमें पता नहीं है हम कैसे, क्या YouTube से या गूगल से या रील से, इससे भक्ति नहीं मिल सकती. हमको गाइडेंस कैसे मिलेगा? क्योंकि इतना है, मैंने आई टोल्ड ना, भूल भुलैया है वेदास की, भूल भुलैया. कोई कर्म योग की बात कर रहा है, कोई कर्म कांड की बात कर रहा है, कोई ज्ञान योग की बात कर रहा है, कोई अष्टांग योग की बात कर रहा है. किसको फॉलो करें हम? कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं किसको फॉलो करो. सर्वधर्मान परित्याज्य, सबको छोड़ के माम एकम के मेरे शरण में आओ, ये फॉलो करो. ये जब तक गीता नहीं पढ़ोगे आप क्या अभी भी है. एक माता जी ने लिखा कि कर्म योग से तो कृष्णा को मिल सकते हैं ना? नहीं मिल सकते. कृष्णा बताते हैं भगवद गीता में नहीं मिल सकते. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने खाली एक ही श्लोक पढ़ लिया है और पॉलिटिशियन ने वो श्लोक को फेमस कर दिया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. वो बेसिक गीता के सेकंड थर्ड चैप्टर में आता है वो श्लोक, एंड कर्म के बारे में. एंड गीता 18 चैप्टर्स की है. इट इज लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हो आप. थर्ड की नॉलेज को लेके यदि आप बोलोगे कि वही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वही सबसे टॉप नॉलेज है, और बाकी उसके बाद में सब इररिलेवेंट है, जो हमने 10th में पढ़ा, जो PhD में पढ़ा, सब इररिलेवेंट है, तो यू बिकम इररिलेवेंट. कृष्णा इज 18 चैप्टर, मतलब ये तो लोअर नॉलेज है. कृष्णा इज टेकिंग अर्जुन फ्रॉम द लोअर, फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग, टू ज्ञान योग, टू अष्टांग योग, टू बुद्धि योग, टू सांख्य योग, टू बुद्धि योग, देन टू भक्ति योग. टॉप मोस्ट लैडर, ये लैडर है, दिस इज लैडर. एंड दोज पीपल हु प्रोपगेट कर्म योग करो, कर्म योग से मिल जाएंगे, दे आर जस्ट कीपिंग यू ऑन द लोएस्ट लैडर. लोएस्ट लैडर की बात है. You have to, if you want to reach God, then you have to climb the ladder and come to Bhakti Yoga. And then there are two ways. Either you climb the ladder and go, or you take the elevator directly. अगर ladder climb करोगे आप हर एक, तो पहले आपको
एक लाइफ पूरी कर्म कांड करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट लाइफ कर्म योग करना पड़ेगा, उसमें परफेक्शन, फिर अष्टांग योग, फिर ध्यान योग, फिर हठ योग, फिर बुद्धि योग, फिर एंड में जाके 10-20 लाइफ बाद में आप भक्ति योग में आओगे। इतना बट एलिवेटर दिया है कलयुग में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण ने कलयुग में अवतार लिया अपने नाम में। और क्या बोला है कृष्ण ने? कले दोष निधे राजनस्ती, एक महान गुण, एक एलिवेटर है कलयुग के अंदर। आप इसमें नहीं फंसोगे, ये सब भूल भुलैया में। एक एलिवेटर है कलयुग में, कले दोष निधे राजन अस्ति, एक महान एलिवेटर है। कीर्तन में कृष्णस्य, कृष्ण के नाम कीर्तन करो, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे कृष्ण के पास, डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। और कृष्ण ने अपना मोबाइल नंबर तक दे रखा है। क्या है मोबाइल नंबर कृष्ण का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मोबाइल डायल करो एनी टाइम। बेस्ट इज मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त टाइम, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा कृष्णा से। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, अपने आप यू विल गेट कनेक्टेड टू कृष्णा। Then you can develop your relationship with Krishna, and then you can easily go back to Godhead. So that's why Krishna stresses so much on the Shastra. That's why he gave Bhagavad Gita, he gave Vedas to Brahma. Brahma को तो कृष्णा खुद ही बोलते, भैया बनाओ जो ही बनाना है, दे दिया। नहीं, पूरा वेदास दिया ब्रह्मा को, इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया। तो शास्त्र का रेलेवेंस इंपॉर्टेंट। और हम हमारा शास्त्र नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम यही है कि इंडियंस they don't read शास्त्र। You see the Buddhist, they read their Shastra like anything. You see the Jains, they read their Shastra like anything. You see the Christians, every Christian reads Bible. बहुत से Christian तो Bible carry करते हैं अपने साथ में जहां भी जाते हैं, and Bible read करते हैं। You see the Muslims, दिन में 4-5 बार नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। पर हिंदू साल में एक बार भी गीता नहीं खोलते। मैक्सिमम हिंदूज नहीं खोलते। कैसे मालूम पड़ेगा उनको कृष्णा के पास पाना है? और उनको कुछ ज्ञान देने जाओ और हमको सब पता है। कहां से पता है आपको? ओ, हमने टीवी सीरियल में देख लिया था। बाप रे बाप, क्या देखा टीवी सीरियल में आपने ऐसा? अरे वो तो हर चीज, सारा बात एक ही जगह जाता है। वाह, यदि आप दिल्ली की ट्रेन लोगे और आपको जाना है कोलकाता, तो आप कोलकाता कभी पहुंच पाओगे? दिल्ली की ट्रेन में नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार ऑल पार्ट डोंट लीड टू वन एंड, डिफरेंट पार्ट लीड्स टू डिफरेंट एंड। लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग अपने दिमाग से, उनको कुछ बताओ तो हमको सब पता है। तो एक श्लोक पता नहीं होगा उनको, उनके फिर बोलो, अच्छा टेल मी द श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, 3rd कैंटो 2nd चैप्टर 3rd श्लोका, बताओ, नहीं बता सकते। टेल मी श्लोक ऑफ भगवद गीता 15 चैप्टर 10 श्लोका, नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। वो यापिंग करेंगे, ओ वी नो एवरीथिंग, वी नो कृष्णा, वी नो गॉड, वी नो एवरीथिंग। कुछ ज्ञान नहीं है उनके पास में। एंड देन झगड़ा करते रहेंगे इधर से उधर। We are responsible because we don't study our own shastra. That is why we don't know who is God. लोगों को ये नहीं पता भगवान कौन है यहाँ पे, और बाकी डेमीगॉड्स कौन है। लोगों को इनका इंडियंस को ये डिफरेंस नहीं पता है, who is God and who is not God, who is demigod. भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं बार बार, less intelligent people worship demigods. जिनकी people, men whose intelligence stolen by illusion, they worship demigods, देवतास। कृष्णा भगवद गीता में कृष्णा ने क्यों किया, इंद्र की पूजा बंद क्यों कराई? कृष्णा was the first person to stop इंद्र पूजा। कृष्णा was the first person to stop ब्रह्मा पूजा। ब्रह्मा को फटकारा, कुछ नहीं मिलेगा। Right? We have to learn from Krishna. He is the one who sings सर्व धर्मान परित्याज्य। लेकिन 99% people को ये श्लोक ही नहीं पता है। The most important श्लोक of भगवद गीता, सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम, only me, just surrender to me, no one else. But when Iskcon people say that only Krishna, then people say, अरे Iskcon लोग बाकी लोग को इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट नहीं, कृष्णा ने खुद ने बोला है गीता में, men whose intelligence stolen by men who are so small intelligence, they worship the demigods and just give everything and just surrender to me. कृष्णा खुद बोल रहे हैं गीता में। ये गौरंगा सुंदर नहीं बोल रहे, या इस्कॉन नहीं बोल रहे, या प्रभुपाद नहीं बोल रहे, या इस्कॉन की बुक्स नहीं बोल रही है, कृष्णा ने स्वयं ने बोला है। But we don't read. That's why Krishna emphasizing शास्त्र चक्षु, this quality, he gives शास्त्र
He emphasizes, he doesn't let you worship sentimentally. बाकी किसी का शो शास्त्र नहीं है, कोई देगा नहीं. डेमीगॉड बिशप शास्त्र नहीं देते हैं अपने, कृष्णा ने स्वयं दिया है. कौन से डेमीगॉड ने एक भी शास्त्र बोला है? Can you recollect any demigod who have given any शास्त्र? वेद व्यास ने. और गीता कृष्णा ने स्वयं बोली है. गीता इज द ओनली शास्त्र जो कृष्ण ने खुद ने बोला है. अंडरस्टैंड? जब इसको भगवत गीता बोला गया है, भगवान की गीत, उसको कृष्ण गीता नहीं बोला गया है. कृष्ण गीता, बाकी तो शिव पुराण, ये सब अलग अलग नाम से. भागवतम, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण भागवतम नहीं बोला है. ये शिव पुराण है, वैसे शिव कृष्ण पुराण नहीं बोला है उसको. भागवत पुराण बोला है उसको. भागवत, भागवत मतलब भगवान का पुराण. भगवत गीता बोला है, कृष्ण गीता नहीं बोला है. भगवान के गीत, तो स्वयं भगवान. इसलिए वेद व्यास ने भी नाम पर, इसलिए मतलब वेद, अगर कृष्ण स्वयं भगवान नहीं होते, विष्णु को तो नहीं बोला, विष्णु पुराण को तो वेद व्यास ने नहीं बोला भागवत पुराण. विष्णु पुराण को नाम दिया विष्णु पुराण, शिव पुराण का नाम दिया शिव पुराण, राइट. देवी पुराण का नाम दिया देवी पुराण. केवल कृष्ण का नाम, पुराण का नाम भागवत पुराण क्यों दिया? बताइए. अगर कृष्ण अवतार होते विष्णु के, तो विष्णु पुराण को बोलना चाहिए था ना भागवत पुराण, और कृष्ण पुराण का नाम कृष्ण पुराण होना चाहिए था. राइट? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर कृष्ण भगवान नहीं होते, विष्णु होते टॉप मोस्ट, तो जो विष्णु पुराण है उसका नाम वेद व्यास को भागवत पुराण देना चाहिए था. और जो श्रीमद् भागवतम जो हमारे पास में है, उसको कृष्ण पुराण नाम देना चाहिए था वेद व्यास को, कृष्ण अवतार होते तो. बट उसको तो विष्णु पुराण नाम दिया, शिव पुराण नाम दिया, लेकिन श्रीमद् भागवतम को भागवत पुराण. बिकॉज कृष्णास्तु भगवान स्वयं, स्वयं कृष्णास्तु भगवान स्वयं. कृष्ण इज नॉट अवतारी, नॉट अवतार, ही इज अवतारी. डेमीगॉड तो दूर की बात है, स्वयं अवतारी. एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम. So that's why Krishna is emphasizing, read Shastra, take knowledge about me. And he's the person who gives the best Shastra. That's why this quality of Krishna, seer by the authority of Shastra, he tells everyone to see everything by the eyes of Shastra. Even what we have to do, activities, everything, do it by the eyes of Shastra. Don't do whimsically. मन किया, हमने नॉनवेज खा लिया, किसने कहाँ पे क्या होता है खाने से, खाना होता नहीं है. रीड करो, मालूम पड़ेगा क्या क्या होता है. फिर आप ये मत पूछा करो क्वेश्चन कि कोई इंसान गरीब क्यों पैदा हुआ है, कोई इंसान डिजीज के साथ पैदा क्यों हुआ है, कोई इंसान को अपने वूम में क्यों मरना पड़ रहा है. डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर द रीजन व्हाई, बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. दैट्स व्हाई यू हैव टू सफर इन द नेक्स्ट लाइफ बिकॉज ऑफ कर्मास. इसलिए शास्त्र पढ़ने को कहा गया है कि आपको क्या क्या आप गलत काम करोगे, उससे आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे. यदि आप नहीं पढ़ोगे एंड यू डू whimsically whatever you want, then you have to suffer. You have to go into depression, you have to go into stress, you have to go into anxiety, you have to go into so many bad suicide commit करते हो, आपको pills पे रहना पड़ता है, because you don't know, you are doing so many wrong things. You think you are innocent, but from the eyes of Shastra you're not innocent. That's why you have to see everything from the eyes of Shastra and do it. How हम जैसे होता है ना कोर्ट में जब दो वकील बहस कर रहे होते हैं तो कोट करते हैं ना वो लॉ बुक को, कि लॉ बुक के यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है. अपने मन से कुछ कोट करते जज बोलते हैं ये कहाँ लिखा है बताओ जरा भैया हमको, कहीं लिखा है लॉ बुक में ये जो बोल रहे हो. अगर नहीं लिखा तो उसको माफी मांगनी पड़ती है, आई एम सॉरी सर. और अगर लॉ बुक में लिखा है कोट करता है, कोट लिखा है. उसी प्रकार शास्त्र में कोट करना पड़ता है. शास्त्र में कहाँ लिखा है वो हमको मालूम होना चाहिए. हम बिना मालूम किए अगर ऐसे लड़ेंगे, अब जो भी करना है करेंगे, तो we have to suffer them. So now we'll end this here only.